Good morning everyone. Good morning. Good morning everyone. ऐसा लग रहा है क्लास में बैठी हूँ सारे एक साथ बोल रहे हैं मेरे को क्लास वाला वाइब आ गया यहाँ पे. वेरी गुड. हाँ, सबने वीडियो ऑन किया. क्या ताजा लग रहा है और कितनी बेस्ट स्मेल बोल रही स्माइल है आप लोगों की. अल्लाह, मेरे को लगता है मेरा काम खत्म हुआ आज. बातें नहीं आ रही. Smile for turning on their videos. Yes, and you get a heart for having the best smile. मिली तुम लोगों को? Yes. स्टिकर नहीं दे सकती ना, टीचर हूँ मैं, तो स्टिकर होता है. हाँ, स्टिकर तो नहीं दे सकती तुम लोगों को. मैं क्या करूँ, तुम लोग इतने इतने दूर हो. तो कोई ना अभी. सो गाइज, दिस इज आयशा शेख, आपकी होस्ट, दोस्त, गोस्ट, जो भी बोलो आप लोग. आज के लिए मेरे साथ मेरे दो टीम मेंबर्स हैं, आलिया जमील एंड रिचा टंडन, जो मेरे बेस्टीज हैं, जो हैप्पी होम मेकर्स, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको चलाने में मुझे हेल्प करते हैं. सो टुडेज कॉन्वर्सेशन और या फिर द सेशन इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ कैजुअल. इस काइंड ऑफ फॉर्मल नहीं जाना है प्लीज. मैं खुद ही नहीं फॉर्मल हो सकती कभी इतने फॉर्मल वाले मीटिंग्स में भी, तो आप लोगों को भी नहीं होना है. वीडियो ऑन रखिए अपना. एंड लेट्स गेट द बेस्ट फ्रॉम मिस सादिया. उसके पहले आई वुड वांट टू शेयर द पीपीटी. ठीक है आप लोग? गुड गर्ल्स, देयर यू गो. इज इट विजिबल गाइस? यस. अच्छे बच्चे सारे. Okay, so there you go. Today's guest speaker is Miss Saadia Taariq. She's the founder of Soar Eagles. So can we all clap for her, guys? Yay, Miss Saadia. So I've met her once in my event, We Happy Homemakers, जो even बतूता में हुआ था. And she is one such charming person, very down to earth, of course. And मेरी टीम तो instantly उनसे प्यार हो गया था उनको. You know, she came all the way from Sharjah and she said one line, Aisha, I don't regret coming for your event. And I was like, hi, Miss Sadke. So she, yes, excellent person she is. And today even I'm excited. I was on a call this morning and I was telling her कि आज मिस सादिया आ रही है. मुझे थोड़ा बहुत मालूम है उनके बारे में, उनके काम के बारे में, but I really want to know her journey. So I'm equally excited जितना आप लोग सारे हैं. So let's begin. So let's know a bit about our speaker, Mrs. Saadia Taariq. Our next speaker over here is Mrs. Saadia Taariq, the founder of the Soar Eagles. Ms. Saadia is an aspiring, pioneering business coach and e-commerce expert. Her journey from a teacher to an entrepreneur is awe-inspiring. She is a mompreneur who is trying to strike a balance between family and business life. With a sheer determination to achieve her dreams, Miss Saadia developed a thought and established the Soar Eagles. तो दिख रहा है अभी Soar Eagles जिस हिसाब से वो मीटिंग्स करती हैं अपना, and the way she's empowering other people, that's commendable, Miss Saadia, and we are really, really proud of you. Thank you so much. Thank you, Ayesha. Thank you so much. Yes, Richa. So come on, Richa. अपने को और enlighten करो Miss Saadia के बारे में बोल के. Yes, definitely. To start with, Miss Saadia is a very, very positive person. The moment we met her, very positive vibrations we received from you. So most welcome, Miss Saadia. Thank you so much, Risha. Thank you so much. And Miss Saadia's main motive behind the Soar Eagles is to encourage and motivate homemakers to transition themselves as self-sustaining individuals. Miss Saadia has many feathers on her scarf: educator, motivational speaker, coaching Amazon and digital marketing enthusiast, to name a few, connected with a few NGO and is as an active women's secretary for PTI overseas. Queen keeps her on the go. Wow. मिस सादिया, मेरे को लगता है इसमें आधे डाले होंगे, आधे डाले नहीं रहेंगे. जितने फेदर से मेरे को 4 फेदर ही दिख रहे हैं यहाँ पे. I don't think it's only 4, right? Thank you so much. Or I'm speechless. Miss Alia, yes. Yeah, thank you, Ayesha, and thank you, Richa. जैसे कि Richa has told, even I have also met Miss Saadia once during a coffee meet, and while conversing with her, I found her quite down to earth person to speak with.
And it really was very proud moment for me to meet her here because, you know, apart from anything else, I would say it's a great achievement for a person to be a very successful business person. So let's back to Ms. Saadia's details. Ms. Saadia's ongoing agenda is to promote the gradually fading Urdu language. She anticipates to see the beauty of Urdu language flourish in a constructive way. That's really nice because, you know, Urdu is a language of love. And the world needs love too much at this time, love and peace. So I would definitely vouch for enhancing this language of love. That's nice. You know, I would totally second Miss Alia on that note. And उनको पता है अपना ये, I think most of the poets and all are, Urdu, yeah. yes, yes, Urdu, I yes. heard that. Ghazals and shairis and all this, you know, सारे उर्दू पोएट ही होते हैं ना, सारे mostly Yes, जो yes, करते हैं. All mostly Urdu yes. words, mostly. Right. और इनकी जो तहजीब होती है या इनका जो जुबान होता है, it's so sweet. Yeah. Actual उर्दू जो सुनने लगेंगे. Known as the language of love, no? Ayesha? Right, right. And this is Miss Saadia's actual venture, right, Miss Saadia? And Yes, yeah, you are I will show it to them right now, okay? But I'm sure you're going to talk about this soon. Yeah? So Yes, whenever right. you want me to display it again, I will display this. So these are Thank you few so of her achievements या फिर अपने venture के जो pictures हैं वो उन्होंने share करे हैं यहाँ पे. This is completely पूरी उर्दू है ये. मेरे को थोड़ी बहुत पढ़ने आती, मैं पढ़ने शुरू करी आधा घंटा हो जाएगा यहाँ पे. Yeah, this is a newspaper clip. This is a newspaper clip in UAE. Wow, Wow, lovely. look at that. Her workshops. That's a son, right? Wow. Yes, my son. Mashallah. Wow. He has grown up now. Really? How old is he now? 9. Oh, mashallah, mashallah. So look at that. And I think, Miss Saadia, you focus more on women, isn't it? Well, I try for both, लेकिन वो होता ये है कि you know men have so many excuses. तो जो जब आप शो अप करते हैं तो obviously आजकल women empowerment का दौर है. वो तो सही है क्योंकि आपके हर पिक्चर्स में, हर जो भी वर्कशॉप्स में मैंने विमेन को ज्यादा देखा है. So yes, guys, let's put our hands together for Saadia Taariq. Thank you so much. सारी चीजें हैं मिस सादिया, but I'm sure हमने काफी मिस करे वहाँ पे. Just brief intro था guys वो, बाकी तो मिस सादिया की जुबानी. Yes, Miss Saadia. First of all, thank you so much. Means you all of you are amazing, but these 3 ladies are really, I don't have words to explain. The day I met them, that was our first meetup. But literally, I'll repeat my words again that I did not regret coming all over from Sharjah to Ibn Battuta. And मतलब it's always a blessing कि आपको जो अपने like minded लोग मिल जाएं अपने surroundings में, और ऐसे लोग मिल जाएं that those who are working for with an objective. So it was really amazing. और जो चीज ने ज्यादा मुझे connect किया, that was like you all had been teachers once, still. It was such an inspiration for me कि मैं अकेली नहीं हूँ. I'm not alone here. So there are so many other people के जिन्होंने same उस level से journey start किया. और honestly मैं बताऊँ, जब मुझे आलिया ने approach किया, it's really an honor. I don't have words to say thank you. जब आलिया ने approach किया for this session, I was like कुछ seconds के लिए तो मैं सोचा कि जिंदगी इतनी fast हो गई है. Honestly speaking, I never got time to sit and look back at my journey. So, and that was a moment. And then when Ayesha called me up, and again I was on the same thinking level कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि how it all started. And it was like something very new to me कि आप बैठो और आप सोचो, just have a look back कि आपने अपना journey start कैसे किया. तो it was really something अच्छा भी था. उसमें कुछ आपके चीजें आपको
खुश भी करती हैं कि ओके दैट वाज द टाइम आई टुक दिस डिसीजन, कुछ चीजें आपको सैड भी करती हैं, ओके आप यू हैड टू सफर ऑल दिस, लेकिन वो कहते हैं ना कि पीपल ऑलवेज लुक एट योर सक्सेस, दे डोंट लुक एट द स्ट्रगल्स दैट यू हैव गॉन थ्रू टू रीच टू दैट लेवल। तो ऐसे ही होता है, जब हम बात भी कर रहे थे ना लोगों से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दे ओनली वांट टू लिसन टू द सक्सेस स्टोरीज, वो उनको इंस्पायर करती हैं, बट दे डोंट वांट टू गो बैक, कि वो पीछे जाएं और देखें कि हाँ भाई हमारे उन स्ट्रगल्स को फेस किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। और एज आयशा सेड जस्ट नाउ कि यस इट स्टार्टेड विद माय टीचिंग करियर। जैसी मैं अब आपको लगती हूँ जी मैं इतना बोल लेती हूँ, आई वाज नेवर लाइक दिस कि मैं इतना बोलूं और इतना बात करूं। इट ऑल स्टार्टेड अराउंड 15 years ago, जब वो कहते हैं कि sometimes it's not always that there is a man behind your success, sometimes you had no other choice. तो मैं अपने लिए हमेशा ये सोचती हूँ कि it did not start because someone motivated me to start, it all started because time gave me no other option, I had to start it. और it started with my teaching career, I had to take it up क्योंकि we stayed in Malaysia for 3 years after I got married in Dubai. In UAE, takriban it's more than 40 years. I've been here with my family. Then I stayed in Malaysia for 3 years. लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जो सोचते हैं sometimes चीजें हमेशा वैसी नहीं होती हैं। तो my husband always had struggle with the finances. मतलब used to start the business, चला नहीं, फिर start something else, but चला नहीं। तो ultimately I had to take the decision, no, I have to come back. इसको मैं अपना घर ही कहती हूँ because मैंने अपना बचपन यहाँ गुजारा है, and this was the place only where I found कि I can be more secure and I can be financially, I can look up to something. So that was the time when I shifted back to Dubai. And I took this decision that no, I have to start working. कभी job की नहीं थी, कभी I had no idea, and पढ़ने लिखने का बहुत शौक था. I always knew that I can teach. This was the thing that I always knew, that I can teach something to others. So I started my career with teaching, alhamdulillah, and that was the time when the journey started. And for 11 years I had been a teacher in UAE. और टीचिंग के साथ ही I started realizing that my journey was not easy. क्योंकि आप जब decisions लेते हैं ना, it's not necessary कि आपको decisions में support मिले, लेकिन I always believe कि अगर आपको खुद को believe है कि you have taken the decision and आप इसको prove कर सकते हैं, this is the main thing, so you have to carry on with it. So it's not that you always get the support, it's that you have to believe in yourself that you have taken the right decision. When I started my job, I felt it was the right decision I could take for myself. Then when I started thinking about the business, because जैसे मैंने कहा कि ups and downs are always there in life, that was the moment I realized that job is not Dubai, UAE में, या कहना चाहिए पूरी दुनिया में, you cannot always look up to the jobs. Or I started having the feeling that I should have something, I should have a plan B with me. वो अल्लाह की तरफ से दिल में डाला. मैं हमेशा कहती हूँ कि there is always an energy, वो अल्लाह की तरफ से जो आपको, you always get that positive vibes कि हाँ you can do this, go ahead and start it. मेरा उसमें कोई बहुत ज़्यादा कमाल नहीं था, but there is always, I found a light at the end of the tunnel. And I never miss it. मुझे जब नजर आई वो light, so I always grab it कि हाँ there is something for me. When I was looking around for a business opportunity, then I found the platform, the networking platform. Soar Eagles, actually it is my networking platform, and that was the turning point of my life, if I'm not wrong. That was actually the turning point of my life, that completely changed my mindset, that opened up a new world to me. New world in the sense that I had been doing job for so many years, and I never thought that there is a world. What would be the world when you quit the job? आपके पास क्या options हो सकती हैं? कितने लोग हैं दुनिया में जो बहुत कुछ different कर रहे हैं, and आप कर सकते हैं बहुत कुछ different. और business कभी किया नहीं था, business की कोई qualification नहीं थी,
But I took the decision when this opportunity came up to me, within 10 minutes, I decided, I don't know, wo shayad there is a, it's from Allah ki aapko ek instinct milti hai ki just do it. And I took up the challenge that, yes, I want to start it. Along with my job, I started it. Fridays was the only day when I used to have the holiday. I used to go for the trainings because networking needs a lot of training. अब एक completely change हो रहा होता है आपका mindset, आपको connection सिखाया जा रहा होता है, how you have to connect to people, how you have to talk to people, and then how you have to listen to their problems. You have to be a very good listener when you are into networking. Or of course, teaching helps because in teaching, maybe you have to have a lot of patience to listen to 30, 35 students. So that was a positive thing that I had at that time. But along with that, I gradually started learning, and then there was no looking back, alhamdulillah. Within 3 years, when I got this, I was given the choice, either you quit your job or you have to leave the business. Because मेरे surroundings में ऐसा perspective था, that I have taken up the business just for hobby. But I had to prove it wrong, that it's not my hobby, it is something that I started because I want to make my career. So when I was given the choice, मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था, and he was also, उसको भी मेरी जरूरत थी. So then I decided, no, it's time to leave the job now. अब आपको full fledged मुझे business में enter होना है without any second thought. Or from that day onwards, when I resigned from my job, you guys will not believe, जैसे मैं कहती हूँ कि हमेशा ही अल्लाह की तरफ से होता है, one after another, things, वो कहते हैं रास्ते आपके लिए खुलते चले जाते हैं. And this is what actually happened. From my networking platform, I had a teaching background. मुझे teaching के in and outs आप लोगों को भी पता है, most of you are teachers here. मुझे भी पता है. So I had this thing in mind कि I don't want to put my son into this business. This is a business now. So I had this thing in mind, no, I want to give him something better than this. I want to give him something which is not like just for the sake of business, which can have more purpose to it. I took the decision of homeschooling. And that was also, there was a lot of, बहुत सारी उसके लिए भी मुझे, मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत rejections आई, बहुत demotivation हुई, लेकिन alhamdulillah, that was the time, it was a blessing in disguise कि corona आ गया. तो whatever जो मैं fight कर रही थी वो homeschooling के लिए, that turned out to be the strength, क्योंकि सारा system ही online हो गया. और वो प्लस ये हुआ कि it became very easy for me कि मैं उसका स्कूल छुड़वाऊं, उसको होम स्कूलिंग सिस्टम में डालूं, and from there my journey as a proper educator and homeschooling coach started. Because जब मैंने एक step लिया, there were so many other moms, some were suffering financially, some had other issues, some were not satisfied with the system. They also jumped into the same boat. उनको लगा कि no, we can sail on the same boat. And there was a group, we formed a group, it's called Cooperative Learning. From that point, now there are mothers who were once teachers. They are all in a group and they are teaching the children in that group. अपनी अपनी services दे रही हैं और उन सब के बच्चे उस group में पढ़ रहे हैं, including my son. We are following a curriculum. We are doing proper homeschooling. ऐसा नहीं कि just आप एक imagine करो and just you go with it. This is how the homeschooling journey started. And then जब आप e-commerce का मुझे हमेशा से craze था, मुझे समझ कभी नहीं आता था. जब मैं देखती थी, when you open your Facebook, you see the ads popping up. और फिर आप Instagram पे जाते थे तो आप एक पूरी अलग दुनिया देखते थे. फिर आप Amazon पे जाते थे तो you will see a new world. Then noon came. तो it was always fascinating and I always used to think कि मुझे ये करना है, लेकिन कैसे करना है वो मुझे नहीं पता था. And जब मैंने networking start की तो मुझे अंदाजा हुआ कि I can connect my networking to e-commerce. But again, कैसे करना नहीं पता था. जो लोग मिलते थे वो खुद तो कर रहे होते थे, but everyone doesn't want to teach you. वो होता है ना कि आपकी कुछ business secrets होते हैं. And then again, it was a blessing that I met a very good friend of mine who is into e-commerce business. और उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, he had his own e-commerce business set up.
and I asked him few questions कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, and from that day onwards there was no looking back. One after another, वो कहते हैं ना एक के बाद एक जो आपकी जो तय है वो खुलती चली जाती है. He taught me everything. He taught me Facebook, he taught me Instagram, he taught me how to run the websites, how to do Amazon. मैं रोज कहती हूँ कि मेरे दिल से इतनी दुआएं निकलती हैं कि मतलब दिस इज हाउ यू विश फॉर समथिंग. वो कहते हैं ना विश कम्स ट्रू, कि आपने बिजनेस का सोचा, अल्लाह ताला ने उसके लिए आपके लिए ऐसे मेंटोर्स खड़े कर दिए कि दे आर देयर फॉर यू. फिर आपने उसका होम स्कूलिंग का सोचा तो देयर वर मदर्स हु केम अप एंड यू फॉर्म्ड अ होम स्कूलिंग ग्रुप. Then when you thought about e-commerce, उस वक्त अल्लाह ने आपके लिए एक बंदा खड़ा कर दिया who showed you the light कि this is how it can be done. And then आपके सामने बाकी का journey. Then I started taking up the classes myself, and I always believe and I always say कि आपको अगर कुछ, there is always a time when you start giving back. Don't keep the knowledge to yourself. आपको जो आता है आप उसको सिखाओ, आप उसको करो. आपको कोई रोक नहीं रहा है और आपको देने से कुछ कम नहीं हो रहा है. And from that day onwards, I'm teaching networking because that is what I learned from my networking mentors. I'm teaching homeschooling because my teaching career had taught me that how you have to give back whatever knowledge you have. I'm teaching Amazon, e-commerce. बहुत सारी इसमें चीजें जितनी भी कवर हो जाती हैं, whoever wants कि उनको ये चीज सीखनी है, चीज that we are teaching online. और उसके बाद the journey, सफर रवा दवा है. वही मैंने कहा ना, लाइफ ने कभी चांस ही नहीं दिया कि मैं बैठ के सोचूं कि how was the journey. वो जब आप लोगों ने बोला तो मुझे अपने लिए सोचना पड़ा कि how it all started. तो this is how it all started. फिर जो मेरी वर्कशॉप्स होती हैं, जब मैंने दूसरों के लिए सोचना शुरू किया, जो लेडीज जॉब्स करती थी, तो मुझे लगा कि जब मेरे लिए चीजें आसान हो सकती हैं, इनके लिए भी आसान हो सकती हैं. And I always believe that you want to change something, you have to bring the change first in yourself. थोड़ा सा मसला क्या होता है कि we try to change the world, लेकिन हमारी अपनी चेंज कहाँ होती है, it gets lost. So I always believe कि खुद चेंज हो and then you give the words to others, so they know that okay, you have done it, they can do it too. Whether it is networking, whether it is homeschooling, whether it is Amazon or whatever, I applied everything on myself first. और ये बिल्कुल it's a blessing from God. मेरा इसमें कोई रत्ती बराबर कमाल नहीं है. मैं इसमें जो लोग, वो कहते हैं ना, every person comes in your life for a reason. So it is actually true. Okay, every person comes in your life for a reason. Now we are starting a new venture, inshallah, soon, and in that Tahira is with me, and we have planned it. And see, as I tell you, that whenever we plan something and we plan it with, aap kehte hain na, you plan it with good intention. Always Allah brings someone in your life to show you the light. And this is my belief, and this is I have seen in life. And then you get connected to people. How I got connected to you, that also I had in mind. Allah ne milaya hai, there must be a reason behind it. I don't know how many lives are there whom I can change, but जब आपको मौका मिलता है, we should not miss it. हमें excuses के साथ उसको face करेंगे ना, तो we miss the chance to help others. We miss a chance to bring something different in the society. If we just keep our excuses aside, करना है तो करना है, then there is no looking back. Now, no matter आपको कितनी rejections हो, आपको कितनी objections हो, आपके घर से कितने आपके anti वो हों, because see, even in your family, you are not always lucky enough to have the like-minded people. But how the things get balanced, this is very important. The things get balanced because आपके surroundings में अल्लाह ताला आपको ऐसे like-minded people देता है कि आपकी वो सारी चीजें balance हो जाती हैं. And I belong to the generation, or my parents belong to that generation, or my husband belonged to that generation, जब social media नहीं था, जब things इतनी open नहीं थी, तो अभी भी that generation उसको ये accept नहीं होती बहुत सारी चीजें जो अब इतनी open है.
that the generation still is not accepting the fact that the things have changed now. और मैं खास तौर पे लेडीज के लिए कहना चाहूंगी, जो मैं स्पेशली, चाहे आप इसको मैसेज समझ लें, चाहे इसको, इट्स ऑलवेज टू टेक डिसीजन फॉर योरसेल्फ. इट्स ऑलवेज गुड टू टेक डिसीजन बगैर सोचे. मतलब यू डोंट हैव टू ऑलवेज रिलाई ऑन हस्बैंड्स, यू डोंट हैव टू ऑलवेज रिलाई ऑन सन्स और ऑन योर ब्रदर्स. अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, गेट अप एंड टेक डिसीजन फॉर योरसेल्फ. अगर अच्छा डिसीजन गोज इन योर फेवर, दैट इज योर सक्सेस. If it doesn't go in your favor, accept that it didn't go. I will take another decision. अपनी सक्सेस को जिस तरह हम एंजॉय करते हैं, we should always accept the failures also. क्यों? उसी से फिर रास्ते निकलते हैं आपके. And I hope मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला होगा. मुझे लग रहा था मैं क्या बताऊंगी. When I started, तो वो एक के बाद एक जो है ना, it just keep on. वो आपका पूरा फिर आपका जर्नी जो है ना, आपके ज़हन में फिर घूम रहा होता है. और पता है ऐसा फ्लैश हो रहा है हमारे सामने एक्चुअली, इसलिए आज पूरे वहाँ सब खामोश बैठे हैं, बिकॉज आपकी जर्नी ऐसी है ना, आपका स्ट्रगल या फिर आपका करियर जो आपने चूज किया, इट इज लाइक हम लोग एक्चुअली विजुअलाइज कर रहे हैं. आई एम श्योर यू नो द अदर गर्ल्स वुड एग्री विद मी. इट्स लाइक मुझे लगा कि इनको बात करने दो. मैं जो बंदी 2-2 मिनट में उठ के बात करनी शुरू करी, आई एम लाइक ऑस्ट्रक, यू नो. सो इट्स वेरी इंस्पिरेशनल सादिया. थैंक यू सो मच आयशा. और बहुत से लोगों को ये होता है कि जी इतना सारा कुछ क्यों करें, तो आप इतना सारा कुछ एक्चुअली एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. आपको अगर कोई मौका मिल रहा है अपनी ही फील्ड और अपने ही उसको आगे स्किल्स को डेवलप करने का, तो इट्स नॉट यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन बोट टू अनदर, या यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन करियर टू अनदर. आप उसी करियर में एक्सेल कर रहे हैं ना. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट उर्दू, उसका भी ऐसे ही हुआ. Because I love to write, I love to read. यही करना आता था मुझे जब तक मैंने टीचिंग स्टार्ट नहीं की थी, कि मुझे बस रीडिंग करनी होती थी या मुझे राइटिंग. तो दिस इज हाउ वो एक थी दिल में, और दिस आई वाज मिसिंग दिस लाइफ जब आप इतने बिजी हो जाते हैं. देन आई गॉट कनेक्टेड विद द उर्दू प्लेटफॉर्म हियर इन यूएई, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बज़्म उर्दू. आई गॉट कनेक्टेड विद देम. वो मैंने कहा कि जब आपको फिर चाहो, फिर आपको अल्लाह ताला ऐसे लोग मिला देता है. एंड इट्स एन दे आर अमेजिंग. Most of them, they are from Lucknow, then which is में पाकिस्तान, इंडिया, सब जैसा मिक्सचर. और उसमें फिर आपको मौका मिला, आपको बात करने का मौका मिला, आपको जो लिखने का शौक था, आपको लिखने का मौका मिला, आपको जो इवेंट्स का शौक था, आपको चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आपको उसका मौका मिला. दीज आर नॉट पेड थिंग्स, दीज आर जस्ट कि आपको एक शौक है, और वो शौक आपकी इतनी बिजी लाइफ में कहीं पीछे रह गया था. एंड देन अगेन आपको दिखाया अल्लाह ने कि ओके दिस इज वेयर इट कैन बी डन, एंड इट स्टार्टेड हैपनिंग. एंड फॉर पीटीआई आल्सो, or politics was always there. Last year I was asked by the party itself, okay, this is the position we want to give yourself, if you can give your services for us. It's also not a paid job, but these are the things that it's time now to give back to the society. बहुत से लोग मुझसे इस पे आर्ग्यू करते हैं, बट आई ऑलवेज से, जब आप एक तरफ से अल्लाह आपको दे रहा होता है, तो दूसरी तरफ से आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू हैव टू गिव बैक इन वन वे और अनदर. Whether if you cannot give them financially, you can give them your services, you can give them your thoughts, you can give them your skills, or you can give them your smile at least. So this is what it is, and it's still on, and Allah knows कि अब आगे कहाँ जाते हैं, and what we have planned कि अब ये करना है, अब ये करना है, वो आप जब it never stops. जब आपको एक वो शौक हो जाए ना कि you have to learn something, so then the journey of learning never stops. और वही बात कि अल्लाह ताला हमेशा कोई ना कोई आपके लिए खड़ा कर देता है, कि जो आपको उसके लिए रास्ता दिखा रहा होता है. It means कि वो एक सिग्नल होता है कि okay, yes, go ahead and do it. Wow. Very good. Amazing. एकदम ऐसे आयशा शेख को ऐसे किया ना, चुप कर दिया इन्होंने आज. which is so difficult and rare that thing to happen. Like yeah, मिस सादिया, आपकी जो जर्नी है माशाल्लाह से, इट्स अमेजिंग.
and good you shared it with us कि हम सबको, even me, हम सबको एक काफी सारी चीजें सीखने मिली. First of all, you're never giving up attitude. That's like commendable. Each woman, अगर हम अपने बारे में भी सोचें, और आप अपने लिए डिसाइड करें, अपने लिए डिसीजन ले, and you never give up. जो भी आप सोच रहे हो पूरी प्लानिंग के साथ करो. Take a pen paper. I do that all the time. लिखो and बाद में देखो pros and cons and then decide करो. अच्छा ठीक है. My husband always says, Aisha, there are two things, like you said, Miss Saadia. So I remember that. तो तुझे लग रहा है तेरे दिल को कि ये होने वाला है, जा कर. तेरे को सक्सेस मिला, ब्रिलियंट. अगर सक्सेस नहीं मिलता, then you will learn from that. There's no failure, Aisha. Failure नाम का है ही नहीं. Yeah, you will learn from that. और तू next time वो नहीं करेंगी. तो तेरे को कितनी सीख मिल रही है. तो तू थोड़ी ना पैदा होके एकदम सक्सेसफुल बनने वाली है. This kind of a person is there बैकअप करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह से. And on the contrary, I have the whole world against me. अभी मेरे माशाल्लाह से जो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, कितने like minded friends मेरे साथ जुड़ गए हैं, like besties for life kind of. But when I actually started, the whole world was against me. So I can relate to you completely. Like how इतने लोगों को है जज्बा, मालूम है, बिलीव कर सकते हैं, बट यार इन सबको कैसे बोलूं. ये लोग पीछे खींच रहे हैं, मेरे को 4 कदम मैं आगे जाती हूँ, ये 10 कदम पीछे खींचते हैं. So that was the thing and which exactly you faced. And then वो वाला phase once you cross, then your work speaks for yourself. Then you sit and relax, and then फिर अल्लाह दिखते हैं ना, he opens your path, he shows you the way, and that's what has happened in your life. And girls, this is exactly my story too. So अगर if you have, अगर आपको लगता है कि आप you want to bounce back to work, या फिर अभी आपको लगता है कि मुझे करियर चेंज करना है, then please follow your passion. जिस चीज में सुकून ही नहीं ना खुशी है, तो उस चीज में like आप 100% दे ही नहीं सकते. And I feel कि हर एक के पास वो होता है पोटेंशियल कि they can give their best, right? तो और जब वो चीज आपको पसंद है, तो इमेजिन करो आप कितना दोगे उस चीज के लिए. तो ये सारे टीचर्स देखो जॉब क्विट करके अपना अपना बिजनेस रखा है सारे. जो मेरे टीम में है उन्होंने तो आधा अपना बिजनेस रखे हैं, सब लोगों ने वापस टीचिंग की तरफ नहीं जा रहे. That's very good. और एक चीज स्पेशली मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर हियर, दे वुड डेफिनेटली रिलेट. देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज नो सोशल मीडिया एंड वी यूज्ड टू मीट पीपल टू डू द बिजनेस. एक आपकी एक इंटरेक्शन होती थी, आपकी कम्युनिकेशन होती थी. ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो आई लिटरली मिस दैट थिंग इन दिस सिनेरियो. और मैं जब ऑब्जर्व करती हूँ तो आई ऑलवेज फील दैट सोशल मीडिया लाइफ इज नॉट एक्चुअली अ लॉन्ग लास्टिंग लाइफ. और अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखो, नो मैटर आवर बिजनेसेस आर रनिंग ऑन सोशल मीडिया, बट एक्चुअली सोशल मीडिया सक्स आवर टाइम आल्सो. A lot. It kills a lot of our time, which we can use for so many other things. We can use for family, we can use for reading, we can use reading का बहुत effect हुई है social media की वजह से. We can use to watch something. एक चीज ये है, तो this is what I feel, that in coming future we have to plan out the things in a way where हमें मिलना ज्यादा पड़े, सोशल मीडिया हम कम यूज करें, बिकॉज सोशल मीडिया तो एक दलदल है, आप इसमें जितना घुसते जाओ यू कीप ऑन, आप घुसते चले जाते हो. तो आई फील फॉर माई सेल्फ, आई डोंट नो अबाउट, सबका अपना अपना सोच होती है कि आप बिजनेस को इस स्टेज पर ले जाएं जब आपको लोग मिलें और बात करें. ये नहीं हो कि वो आपको सिर्फ उस हद तक जाने कि ओके यस आई हैव सीन हर ऑन दिस पेज, आई हैव सीन हर ऑन दैट पेज, बिकॉज दैट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस. अभी हम लोग बहुत सारे डिफरेंसेस क्यों नहीं ला पाते हैं? बिकॉज पीपल लुक एट सोशल मीडिया की लाइफ, एवरीवन डजंट बिलीव इट्स ट्रू और नॉट, फेक भी है उसमें. तो दे डोंट, उनकी जो बिलीफ है ना, उसको हम क्रिएट ही नहीं कर पाते हैं टू सम एक्सटेंट, दैट यस दिस कैन हैपन, दिस मैजिक कैन हैपन इन देयर लाइफ. लेकिन जब आप उनसे मिलते हो ना, दैट पॉजिटिव वाइब वो आपकी ट्रांसफर होती है एक दूसरे के अंदर. सो सोशल मीडिया का जिसने जैसे इस्तेमाल करना है, बट हमें कोशिश ही करनी चाहिए टू बिल्ड अ बिजनेस टू दैट लेवल वेयर वी कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड वी कैन, हम मिल सके लोगों को, हम बात कर सके उनसे, वी कैन मीट देम एंड वी कैन टॉक टू देम, वी कैन कन्वे अवर मैसेज one to one with them. True. And Miss Saadia, you rightly said that, कि जब हम physically किसी को मिलते हैं, that interaction is completely different.
So that makes a whole lot of difference. But then yes, again it has got its pros and cons, like reaching out to someone, like अभी है पता नहीं अलग अलग countries से सारे join हुए हैं, like watching you No, live. it's not for this platform. It's Yeah, I'm talking in others, general. हाँ. Because आप देखोगे, आप in future भी अगर आप अभी भी observe करो that जो अभी upcoming, see we have come up from that stage now. True. हमने वो stage गुजार ली है. True. But जो upcoming entrepreneurs हैं, why do you see anxiety in them? Why do you see depression? Why do you see? Because sometimes they feel they have failed on social media, so it is True. not happening. Very true. I've So seen my friends. we have crossed that age now. हम वो निकल आए space से. But to support them, क्यों हम seminars पे वापस क्यों जा रहे हैं? हम physical workshops पे क्यों वापस जा रहे हैं? Because everyone back of the mind, सब entrepreneurs ये realize करते हैं कि something it's missing on social media. But ये मेरा perspective है. मैं wrong भी हो सकती हूँ. लेकिन either we support that, जैसे आप लोग support कर रहे हो, you are supporting young entrepreneurs जो upcoming हैं. It's very good. They need our support. बजाय इसके कि उनको लगे कि there is no one to listen to us. So it's a very positive thing, and we must not stop it, whether it's physical or whether it's on social media. It must go on. True. That is true. I would agree with you, Miss Saadia. ये तो आपने सही बोली है, and physical तो है ये अपने को. मेरे को इतना मन करता है ना ड्राइविंग आके मरती मेरे को कसम से. दुबई में रह के सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरा यही है कि 8 साल से आई वाज लेट बैक. मैं बोली मेरे शौहर होंगे, मेरे को लेके जाएंगे, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज सब जगह. ट्रस्ट मी, आई एम सफरिंग बैडली. और मेरी टीम में भी किसी को नहीं आती गाड़ी चलाना कि मैं बोलूं चलो मेरे को लेके चलो साथ में करके. तो कैब हमेशा एक होता है हमारा. So girls, it's for you all as well. So yes, Miss Saadia, I loved your session, your speech, and your motivational talk. It was like awe-inspiring for me, and I'm sure for the girls. So girls, it's your turn. आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको जो पूछना है. Over to you. Anything? Yeah. Yeah, definitely. Miss Saadia, thank you so much for the wonderful session, and definitely I'm taking 2 pieces of advice from your journey and what all you told today in the session. Firstly, bringing a change in oneself, that's very important, because what happened, we tend to blame the surrounding, the people. हालात ऐसे थे, वो गड़बड़ था, फाइनेंस नहीं था, बहुत से इश्यूज होते हैं जिसके लिए हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग, ब्रिंगिंग अ चेंज इन वन सेल्फ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आपका हमको बहुत अच्छा लगा, इट्स एक्चुअली ट्रू, बिकॉज वी टेंड, हम लोग का नेचर होता है, ह्यूमन नेचर है कि हमेशा एक्सक्यूजेस ले आते हैं सामने, तो उसके चलते फिर आगे चीजें नहीं हो पाती हैं. So that is one thing which definitely I would like to imbibe in my journey for whatever I do आगे. And second is the giving back. Whatever you said, that giving back is very important. कि जो भी थोड़ा बहुत we know अपने लाइफ में, जो भी थोड़ा बहुत we know and जो भी हम लोग ने स्टार्ट किया है या जो भी हमारा सीख हमने ली है लाइफ से, तो definitely helping others and lifting each other up in times of distress or any need. That's very important. So definitely these 2 pieces of advice I would like to imbibe in my life. So thank you so much once again. And very good session, very learning. Thank you. बहुत ही अच्छा learning session था, मजा आ गया. God bless. Thank you so much. Yeah. You're welcome, dear. You're welcome. Always. Always. Yes, girls. और कौन तो भी. मैं थोड़ा सा जी नादिया. बहुत अच्छा सेशन था, और मैं सादिया के बारे में कहना चाहूँगी कि शी इज अ ग्रेट मेंटर एज वेल. और इसकी सक्सेस का तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये लोगों को बहुत हेल्प आउट करती हैं, उनके लिए रास्ता बनाती हैं, तो फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद इनके लिए वो रास्ते बनाता जाता है. तो इन्होंने अपना नॉलेज सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि दूसरों को भी उससे फ़ायदा पहुंचाया है, और फिर दूसरों को भी उसी तरह हेल्प करती हैं. तो वो चीज़ें खुद ब खुद इनके लिए जो है वो ओपन होती चली जाती हैं, इनको खुद भी नहीं पता चलता. तो उसका मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीज़न है इनका, जो मैंने मतलब कि ऑब्जर्व किया है इस टाइम पीरियड में. I would agree with you. Thank you so much. Thank you. वालेकुम अस्सलाम. हाँ जी, मुझे भी सादिया जी के बारे में कहना है कि वो बहुत अच्छी है, हमारी मोटिवेशनल स्पीकर है. आज हमने हाउस वाइफ भी होकर मतलब इतना कुछ उनसे सीखा है कि जो शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं था. तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छी लीडर है और मेरी इंस्पायर है, और मतलब मैं हमेशा उनसे कुछ नया सीखती हूँ.
और वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करती है। उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं हमारी। थैंक यू सो मच तस्नीम, थैंक यू सो मच। आप लोग खुद सब बहुत अच्छे हैं, ढेरों दुआएं आप सबके लिए। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज स्पेशल, अपने अपने तरह में सब बहुत स्पेशल और बहुत जबरदस्त है, अमेजिंग है। थैंक यू सादिया जी। टेक क्रेडिट फॉर हरसेल्फ एंड जो बंदा अपने रूट्स नहीं भूल सकते ना, लाइक यू नो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमको हेल्प करते हैं नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए। तो शी इज गॉट फ्यू पीपल जो उनको हेल्प किए हैं, बट देन स्टिल शी इज गिविंग क्रेडिट्स टू देम। सो शी हैज नेवर फॉरगॉटन हर रूट्स कि कहाँ से हुआ, किसने ये मेरे को सपोर्ट किया। उसके बाद शी इज ट्राइंग टू पास ऑन टू द रेस्ट ऑफ द पीपल, एंड दैट्स हाउ आई थिंक यू आर। आई वुड अग्री विद दिस गर्ल्स कि आप ऐसे रास्ता बना रही हैं लोगों के लिए, तभी आपको सक्सेस मिल रही है माशाल्लाह से। Good job. So, girls, anything else from anybody's side? I'm sorry, I hope I didn't take too much time. No, that's fine. We almost at the end. हमारा रीचा का गाना होगा. If there's no one here, किसी और के पास कुछ नहीं है, तो फिर बाद में it will be like, yeah, Tahira has and Poonam has. Okay, Poonam. Miss Saadia, very inspiring story. I know a lot of struggle. आपका जो struggle रहा होगा उस समय, जो आपको feel हो रहा होगा, आपने जिस तरह से explain किया एक एक छोटी छोटी चीजें, it was really ऐसा लग रहा था हम वो ऐसे flashbacks देख रहे हैं जो आयशा भी कह रही थी. But truly we would like to connect to you. I would especially like to connect to you. So I will take down your number and then call you someday, and you know we'll have a chat. But truly amazing, and you are really doing a good job of inspiring a lot of females and giving them, you know, some guidance. So बहुत अच्छा लगा आपका session, and thank you so very much. Thank you. You are always welcome, Poonam. You are always welcome, and thank you so much for your kind words. जी ताहिरा जी, yes, and then we will have Richa song हमारा, okay? मिस ताहिरा आप म्यूट पे हैं. Can you hear me now? Yes, we can. So I'm the last and the best. Well, Saadia spoke about her, you know, the whole where she started and where she has reached. I don't want to go into that. I want to talk about Saadia because I have known her for a few years, and all I can say is she's a wonderful, and she's transparent, and whatever she does with love, I mean, it's, you find many people imparting their knowledge or their secrets with others, which she's doing, and God bless her. There is an age difference in her, and we grow very well because she understands the opposite person, and then she gives that person all the advice and knowledge she needs, and that she has done with me, and she's boosted me, she's lifted me up, and she's doing that with a lot of people, for which, as you said, whatever she does is commendable, and I think we should clap for her. Thank you so much, Tahira. Thank you so much. Thanks a lot for your kind words. I'm speechless. I'm really, I don't have words. That's sweet. That's sweet of you, Miss Tahira. So yes, here you go, Richa. Yeah, sure, definitely. So the song, I'll dedicate the song to life. That life is a beautiful journey, and as Ms. Saadia just took us all on a beautiful journey as to how inspiring and how beautiful we can make our life ourselves. So this is dedicated to life. Yeah. जिंदगी एक गीत है, उसे होठों पे सजा लो, गम हो या खुशी हो, प्यार से गुनगुना लो, दिन हो या रात हो, दिल की ये बात हो, कोई ना जो साथ हो, गाए जा
जिंदगी एक गीत है, उसे होठों पे सजा लो, गम हो या खुशी हो, प्यार से गुनगुना लो. Thank you so much. Thank you, Richa. Thank you. Oh, God bless you. Thank you very so job, very much. job. Love it. I wait for this Thank as you well. so much. Chalo, guys, thank you so much for joining in. And thank you so much, Miss Saadia, for Thank you, your dear. Thank you, inspirational Ayesha. talk. Thank you, Alia. Thank you, Richa. Thank you, everyone, for Thank you. joining, and Thank God you bless so you much. all. We'll Thank be you so uploading much, this video Saadia. on YouTube and we'll be sending the link to you. Noor, sweetie, you can connect with us on Happy Homemakers. We will be sharing Miss Saadia's contact number there, so you can connect with her directly. All right? So सबको मिल जाएगा साथ में. Chalo then. Take care. Thank you. Much love. God bless. Thank you so See much. ya.